So let me welcome up on the stage Kumar Shivramakrishnan. Okay, have a seat. Hello. Yeah, this is not a good mic. Hello. Go get a chair. ये chair इधर क्यों है? Boss, can I get a chair? I want a chair. Thank you. Okay, congratulations all of you. First of all, on going eagle and being a, यहाँ पे there are two kinds of people who are eagle and people who don't know what they're in. There are some very, very new people here because I don't have time to do another meeting. And I've come all the way from the US. There are some personal groups we are working with. So who is very, very new here? Extremely new. Don't know what you're in. Can you stand up? Okay, good. Congratulations. You are actually attending chapter 10. What is your name? Huh? Oh, you are Vijay Sharma. Okay, good. Okay. Preeti. Okay, what is your name? What's your name, boss? Huh? Mahesh. Okay, who's new? Sachin. Sachin. Okay. Santosh. Neeta. Okay. I mean, I want to sort of apologize to you, first of all, because this is a leadership event. Okay. This is usually what happens after you really, really build the business. Business build karne ke baad, you know, something that a real level that you will reach, you build a solid structure, you know, and then you qualify for a leadership like this. But we are actually making you go through chapter 20 before you go through chapter 1. Okay. But if you have good memory, just remember chapter 20. Okay. And you catch up with the remaining 19. Baad mein. ठीक है? चलेगा? Okay. But I want to congratulate all the Eagles. It really, you know, I know that we have to promote the Eagle program in a stronger way. Because I noticed that, you know, I take responsibility for it. I noticed that we recognize the Eagles, but we did not recognize the double Eagles and ultimate Eagles, because even though it's in the brochure, you know, we are talking about so many things that we have not talked about the Eagle program enough. Okay, so I want to change that. Because, but I also want to congratulate you, because even though we have not really promoted the Eagle program heavily, you have qualified. Normally, I'm speaking in Pune to 13,000 people yesterday, or Shanmugananda Hall with all these people. But I like the smaller the meeting it is, the more I like it. My most favorite meeting in this business is in someone's house. Not a home meeting, but like a cover dish. Home meeting is new people. It's okay. I mean, they'll ask all kinds of stupid questions. So it is not my favorite meeting. Cover dish is good because everybody is already IBO, you know, and you go bhav milta usme, you know, right? Okay. I like smaller meetings, you know. And the smaller the meeting, the better. So we'll think of this as a big home meeting. And you new people, you are also very fortunate to see all these leaders in such a small setting, because you will never see, maybe if you go to a BBS, you will see them, you know, somewhere in one corner in Shanmugananda Hall or some Andheri Sports Complex or something, you know. But all these emeralds and diamonds, give them a big hand. Give them a really big hand. Okay. So what is Eagle? See, even if you have seen the plan, जिन्होंने अभी प्लान एक बार देखा है, the business is, what is the business? You have to use your products, you have to sell the products, and you have to duplicate it, correct? Right? See, when you sign the contract, in US you can you sign up online here in India? Okay. Do you have to press I agree? Okay. How many of you have installed any software in your computer? Okay. So you put the disk in, and it comes up with a license agreement, you know. Either it says you have to press I agree or I don't agree, right? Okay. I thought that if you say I don't agree, it will still grudgingly install the software. It doesn't do it. अगर I don't agree लिखा तो फिर भी वो install करेगा, you know, थोड़ा hesitate करेगा, ऐसा नहीं है. If you don't press I agree, वो install नहीं करेगा. But when you press I agree, you are agreeing to a lot of things that you don't even know. Okay. Amway में when you signed up, when you said I agree, I know you have not signed up yet, you know, but when you said I agree, you actually agreed to train and motivate your people. Amway will not do it. Training, motivating and supplying is the upline's responsibility. That's why you're a business owner, you're not a salesperson.
You're not a sales agent for Amway, okay? You are a business owner, okay? And you agreed to develop the team and train, supply and motivate your people. And it will be very nice if I could sign somebody up. They press I agree. Contract to sign kar liya. Kaun padta hai sab kuch, right? Okay? And then say, okay, why don't you go train and motivate your people? Call me when you're platinum. अच्छा होगा ना कि किसी को साइन अप करो, हैंडशेक करो, बोलो अभी जाके बिजनेस बिल्ड करो, अपने लोगों को ट्रेन करो, मोटिवेट करो, क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने आई एग्री किया है. जब प्लैटिनम हो जाओगे तो मेरे को कॉल करना, अच्छा रहेगा ना. बट दैट डजंट हैपन, राइट? एक्चुअली ब्रिट वर्ल्डवाइड इज अ वे टू यूज समबडी एल्सेस एक्सपीरियंस. So rather than you train and motivate your people, you use a proven method of training and motivating. So actually sometimes नए लोग समझते हैं कि मीटिंग में आते हैं, समझते हैं कि they are doing a big favor by supporting the meeting. Actually Brit Worldwide is doing a big favor by organizing the meeting, because otherwise नहीं तो you have to go and train and motivate your people yourself. How will you do it? What is Eagle? Why do we have Eagle? First of all, how many of you in here want to be a diamond within 2 years? I want you to mean it, only if you really mean it. Okay, let me ask another way. How many of you have counseled with your upline, and your upline and you both agree that you will be diamond in 2 years? See, the number of hands went down, okay? Diamond in 2 years, okay. Satish, it's okay if I use an example, right? चलेगा ना? खड़े हो जाओ, सतीश सामने खड़े हो जाओ. I didn't even know आप लोग आ रहे हो इधर आज. अच्छा, मेरे को बताओ आपके कितने legs थे फंक्शन में? 6 थे, good. Okay, who else raised their hand? Okay, आपके कितने लेग थे? 6. 7. Anybody else? 6. Okay. अगर कोई यहाँ पे बैठ जाए, अगर कोई यहाँ पे ऐसे कोई थे जिन्होंने हाथ उठाया लेकिन आपके 6 लेग मिनिमम नहीं थे, I would really like 9, शंकर, tell you the truth, okay? Because एक का अगर पंक्चर हो गया तो बाकी 1-2 है बाकी, you know? होता है कभी-कभी पंक्चर, you know? But minimum, how many legs you have at the function, Arun bhai? Huh? 9 legs. आपका 12 है नंबर, okay? अभी से नहीं, 9 is good. See, 9 legs at the function नहीं है तो you're joking yourself, you're kidding yourself. Because leg को mature होने के लिए 1-2 साल तो लगता है ना. अगर अभी आप, and everybody sitting in this room, you should have a minimum of 9 legs going to function. ठीक है? That मैंने ये नहीं बोला कि आप 9 legs एक ही effort, एक ही टाइप वर्क करो. मैंने वो नहीं बोला. मैंने बोला 9 leg going to function. ज़्यादातर एफर्ट आप 3 और 4 legs के ज़्यादा नहीं कर सकते. You can only work 3 or 4 legs, 4 groups in any given year. But you should have 9 legs associating. Because the biggest legs you will have are the ones where you put the least effort. जहाँ पे सर फोड़ते हैं ना, वहाँ कुछ ज़्यादा होता नहीं है. How many of you know what I'm talking about? I have people who are in the business before Rich DeVos was born. Rich DeVos के पैदा होने से पहले वो बिजनेस में वो लोग. The leg that I, जिसमें maximum effort मैंने डाला है in US, that is my weakest leg. ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलूँ कि effort डालो ही मत. एक बीच वाला level होता है where, because see, मैं कल भी पुणे में बोल रहा था कि इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है. किसी को स्पॉन्सर करते हो, मैं आपको स्पॉन्सर करके अगर मैं आपको 3 प्लान करूं आपके लिए, उसके बाद यू शुड शो योर ओन प्लान. मैं 15-20 क्यों दिखाऊं आपके लिए? ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या प्लान दिखाना? मैं लोगों के लिए 3 या 5 से ज्यादा नहीं करता. एंड आई लोन देम अ लॉट ऑफ सीडीज, बट नॉट अनलिमिटेड. यू नो, फर्स्ट 2-3 months when I find depth, I stop doing everything for everybody. I want duplication. Eagle क्या है? Duplication, team of 10. That's what, team of 20, right? 20 people at the function, Eagle, right? Here it's 20, right? And you have 10 standing orders, right? Okay. Team of 20 is Eagle. You are looking for 20 people who will follow you. 20 people spread across at least 3 legs. But nobody said कि 4 leg मत करो. See, ultimate Eagle जाओगे वही 3 leg के साथ. Double Eagle जाओगे उसी 3 leg के साथ. But nobody said that you should not have 6 more legs everywhere, you know. So आपका first order of business is to, you know, get 9 legs associating everywhere. Don't try to be so bookish के इसको ऐसा ही help करना है. इसके लिए ये आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जल्दी सीख जाएगा. ये रॉकेट साइंस थोड़ी है यार. इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. वो 643 दिखाने के लिए कितना मैं
अपना प्लान, वन ऑन वन प्लान मैं बहुत सिंपल रखता हूँ. मैं ज़्यादा हाई फंडा चीज़ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू फील दे कैन डू इट क्विकली. मैं किसी के लिए 50 फोन कॉल नहीं करूँगा, 5-10 करूँगा, उसके बाद तुम खुद करो. Because not that I am a big shot, I am willing to work very hard. But I feel that I don't think I am a genius. My genius comes with leadership level, not at this 4 basics level. मैं कॉन्टैक्टिंग, अगर आपने मेरे को कॉन्टैक्टिंग करते हुए देखा किसी को नेम लिस्ट बिल्ड करने के लिए, जैसे आप लोग, आपके विजय, आप इसमें हो, फेसबुक में हो, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव? फेसबुक के कितना फ्रेंड्स हैं? 15. Both good. At least you know 15. Okay, how many people do you know in Bombay? मुंबई के हो ना आप? कितने लोगों को जानते हो आप? एक नंबर दो. 400 to 500 ना? बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन. सो यहाँ पर ईगल्स भी हैं जिनके नेम लिस्ट में आपने पूरा सबको प्लान नहीं दिखाया है. ओके, बट आपके जो 400-500 है ना, वो काफी है. बट उनमें से यू मे आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टॉक टू पीपल यू डोंट नो. मतलब यू हैव टू स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल. यू नो, हर बिजनेस में होता है. कोई भी ऐसा बिजनेस जिंदगी में नहीं जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ कर सकते हो आप. किसी ने रेस्टोरेंट खोला, नहीं मेरे रिश्तेदार खाली इधर आके खाएंगे, कैसे चलेगा? वो आके खाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे. ओके, सो हर बिजनेस में कोई बोलते अरे अजनबियों से बात करना पड़ेगा. हाँ, एनी बिजनेस, राइट? सो ऐसा टाइम आएगा जब यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. नाउ इफ यू सी मी टॉकिंग टू समबडी यू विल नॉट बी वेरी इंप्रेस्ड. मैं कुछ ऐसा कोई हेवी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा जिससे आप नोट लिख सकें. कुछ नहीं दिखेगा आपको. इट्स अ वेरी सिंपल टू मी. इट इज लिस्ट बिल्डिंग एंड आई डोंट स्पेंड टू मच मेंटल एनर्जी बीटिंग द क्रैप आउट ऑफ पीपल अबाउट दिस. वो हो जाएगा यार. इट्स ओके. आई मीन आई अस्यूम कि यू कैन राइट योर ओन नेम्स एंड यू विल टॉक, बिकॉज आई हैव टू अस्यूम कि आपका ड्रीम है. इफ आई हैव टू सिट ऑन योर हेड to write your own list, that means you don't have a dream. Find somebody else. So yes, you build a list, all that is fine, but I am not thinking it is a complicated process. Okay, I naturally expect you to start showing the plan. इसमें बहुत, I think some people do too much of a big deal. What follow up, man? Yes, you do follow up, but it is not a complicated process. अगर मैं प्लान दिखाता हूं किसी को और वो तुरंत साइन अप करने के लिए रेडी है, मैं क्या उसको पहले वो मीटिंग में आओ, उसको टोपी लगाओ, ये करो वो करो, साइन अप देयर मैन, बाद में मीटिंग लेके जाओ. जरूरी नहीं है कि मीटिंग पहले ले जाओ. एट ईगल लेवल यू शुड बी लिटिल फ्लेक्सिबल. ब्रिज सिस्टम इज लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, बट इनसाइड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम. इट इज नॉट सपोज टू रेस्ट्रिक्ट यू. ओके, एंड प्लीज डोंट स्टॉप थिंकिंग. I see that people are so bookish, man. Oh, ऐसा बोला, ये बोला, notes लिखा, ये क्या? This is not a school. This is not something that you mug up something and then you vomit in the exam and forget it. हम लोग वही करते हैं ना स्कूल में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लिया, ये किया, वो किया, एग्जाम खत्म हो गया, भूल गया था. बिल्कुल बोलते हैं जो भी दिमाग में आता है वो कोई भूलता नहीं है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेरे को कुछ याद नहीं है. बट दिस इज नॉट अ प्रोसेस. इसमें अगर मैं 10 साल के बाद वही चीज कर रहा हूं जो 10 साल पहले किया, आई हैव नॉट इवॉल्व्ड. ओके, सी मैं यहां बैठ के मुझे, आई शुड नॉट हैव टू टेल यू दैट यू नीड 9 legs एट द फंक्शन. देयर आर सर्टेन थिंग आई शुड हैव टू टेल यू. दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस. मैं आपको एक चीज बताऊं, पीपल थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट. आप लोग सब फंक्शन जाते हो ना, यू नो हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस. डोंट वरी अबाउट इट. Sometimes thinking that you don't know is worse than actually not knowing. Right? You already know. I'll give you an example. पहली बार मैंने जब गाड़ी खरीदी इंडिया, यूएस, मैंने इंडिया में कभी गाड़ी नहीं चलाई, कार. First time, you heard me talk about this? First time I bought a car, I bought a Mazda 626. And I bought a standard shift. I didn't buy automatic. Why? Because Mazda 626, it was the stick shift was, जो stick shift को इधर क्या manual transmission was $600 cheaper. The car cost $10,500. I put $500 and borrowed $10,000 from the bank. This is when I had just finished college. Now I had never driven a stick shift before.
brand new car. I am driving stick shift first time. I took my lessons, driving lessons in automatic. I took 2 देसी बस फ्रेंड्स को ले गया मैं वहाँ पे, क्योंकि पहली बार मैं मैनुअल शिफ्ट ड्राइव कर रहा हूँ लाइफ में, और ड्राइविंग भी ज़्यादा किया नहीं वैसे, ऑटोमेटिक में सिर्फ वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया बस. सो आई टुक 2 देसी फ्रेंड्स ऑफ माइन, उनको बोला एक आगे चलाओ एक पीछे चलाओ, बिकॉज मैं किसी को अगर ठोकने वाला हूँ तुम दोनों में से एक को ठोकने वाला हूँ, किसी अजनबी को नहीं ठोकना है. ओके, सो आई टुक द कार एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग, राइट. वो इतना स्टॉल हुआ, बट आई डिडंट हिट एनीथिंग. यू नो व्हाई? For me, $10,000 at that time was, oh my God, like the whole world. It was big amount, I didn't even have, I had $800 in the bank, $500 to the isko de diya, baki 300 hoga, and 10,000 is a big amount. So I stalled, but I figured out how to stick, I learned it in 1.5 hours because I didn't want to hit my car anywhere. But at the last time, I took them to Edison. I was driving back to Edison, न्यू जर्सी. एंड एडिसन इज द हब ऑफ एडिसन. न्यू जर्सी एडिसन में इतने देसी लोग हैं कि अगर आप अमेरिकन हो तो आपको पासपोर्ट लेके घूमना पड़ेगा उधर, वैसा है. ओके, उसमें यू गेट एवरीथिंग इन. आई एम टेलिंग यू, आप लोग इतने प्यार से खाना वाना ले आते हो. मैं हमेशा यह आपको पूछता हूँ कि घर से है कि नहीं. घर में बना हुआ है तो आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज जो होटल में है एडिसन में सब कुछ मिलता है, एनीथिंग, एंड समटाइम्स इवन बेटर टेस्टिंग, सब मिल जाता है उधर. सो वी डोंट मिस एनीथिंग इन एडिसन. एनीवे, मेरे घर से अबाउट 40 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस है अभी. लेकिन उस वक्त वहाँ पे एडिसन में एक वुड एवेन्यू ऐसा है. वुड एवेन्यू इज लाइक दिस स्लैंट स्लोप. ये ओक ट्री रोड है. ओक ट्री रोड में इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो मैं इनको ट्रीट करने ले जा रहा था. ओके, सामने एक पीछे एक मैं बीच में. स्टैंडर्ड शिफ्ट पहली बार गाड़ी ऐसे पीछे निकल रही है, स्लाइडिंग. ब्रेक मारा मैंने. उधर ट्रैफिक लाइट है बड़ा वाला. वो ट्रैफिक लाइट जल्दी नहीं, वो जल्दी चेंज होता है लाइट. तो वो स्लोप में खड़े थे, 10 मिनट तक खड़े थे. और जब भी चालू करना पड़ता था ना, तभी क्लच दबा के ये करो, वो पीछे ऐसा लगता था कि पीछे वाला डेफिनेटली ठोकने वाला है. लेकिन नहीं हुआ, सब ठीक ही हुआ. फिर क्या हुआ, मेरा एक दूसरा दोस्त था जो स्टिक शिफ्ट करता था, उसको मैं देख के मैं बहुत इंप्रेस होता था, क्योंकि वो पावर विंडोज भी नहीं था वो टाइम पे. वो गोल गोल घुमाने वाला विंडोज था. वो स्टिक शिफ्ट चलाता था, सीडी बदलता था, कॉफी पीता था, वो टोल का पैसा डालता था, विंडो खोलता था, फिर भी चलाता था एकदम बिंदास. मैं बोलता था वाह मैन, वन डे आई वांट टू बी लाइक हिम, राइट. वो मेरा ड्राइविंग का डायमंड था वो. तो जब नया नया आदमी आता है तो सोचता है ऐसा ही कि अरे मेरा अपलाइन क्या फोन कॉल करता है या फॉलो अप करता है. बट एक महीने क्या 3-4 एक हफ्ते में आई वॉज डूइंग द सेम थिंग. मैं इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस में चला गया. अभी ये मैनुअल शिफ्ट के 2-3 महीने के ड्राइविंग के बाद मैं भी वो करने लगा ना. मैं भी कॉफ़ी पी रहा था, विंडो खोल रहा था, कैसेट टेप बदल रहा था, गाड़ी में स्टिक शिफ्ट कर रहा था. आई मीन एवरीथिंग आई वाज डूइंग जस्ट लाइक माय फ्रेंड, बिकॉज इट हैज रीच्ड द सबकॉन्शियस पार्ट. इट हैज बिकम पार्ट ऑफ नेचर. ये प्रॉब्लम इज एवरीबडी इन हियर इज ऑलरेडी इन द सबकॉन्शियस इन दिस बिजनेस. बट क्या होता है कि लोग सडनली, अगर मैं 2 साल से एक गाड़ी चला रहा हूं, सडनली आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि इसमें क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सेलरेटर कौन सा है. एक्सीडेंट होगा ना. तो इसमें ये बात नहीं है कि मैं जानता नहीं. प्रॉब्लम इज आई एम डाउटिंग माई सेल्फ. सो डाउट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट डजंट इवन एग्जिस्ट, है ना. ये बिजनेस में कई लोग वही है, हो गया 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, सडनली दे आर डाउटिंग. जो पहले 3 लेग में किया वो चौथा लेग में कैसे करेंगे पता नहीं. किसी का बच्चा, अभी देविका जब हमारी सबसे पहली पैदा हो गई थी, आपका भी सब एक्सपीरियंस होगा. फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बीच रात में उठ के देखते कि ब्रीथ कर रही है कि नहीं, सब ठीक ठाक सांस ले रही है. फर्स्ट का चाइल्ड है ना, और थोड़ी भी रोएगी तो सारा घर में सब लोग. तीसरी रितिका है, जब तक रितिका आई तो एकदम बिंदास, तो रो रही है तो बोलते ये तो सीरियस नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग सो जाते, राइट. बिकॉज यू आर सपोज टू बिकम मोर कंफर्टेबल. देविका के टाइम पे मे बी पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प चाहिए था कि किसी ने सिखाया कि दोनों तरफ से चीज़ें निकलती रहती है ना, ऊपर से नीचे से, वो जो डायपर बदलो वो. तो अभी पहली बार ठीक है, ओके सीख रहे थे.
अभी जब तीसरा बच्चा पैदा हो, ऑलरेडी नो इट्स गोना हैपन. तभी जाके पूछेगा मम्मी अभी मैं क्या करूं. ऐसे लोग बोलते हैं 3 लाख तुम्हारा हो गया बॉस, तुमने ऑलरेडी स्पॉन्सर कर दिया, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. चौथे मैं क्या करूं. आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू मैन. यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट. यू ऑलरेडी नो इट एंड यू एक्ट लाइक यू डोंट नो इट. मैंने कल बोला ऐसा अगर कोई सवाल आपको, अगर ये लेवल पे आपको एमए आपको नहीं है, आप लोगों को कोई सवाल पूछेगा जिसका जवाब आपको पता नहीं है, चांसेस आर मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मैं अपने थोपड़े में नहीं दिखाएगा. वही है एकदम, जैसे जवाब मालूम है वैसे देखूंगा बस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. देयर इज नथिंग. इन फैक्ट आई विल टेल यू टुडे, you know more than me in terms of knowledge, guaranteed. In terms of product knowledge, in terms of leadership, I don't know, but in terms of product knowledge, in terms of PV, BV, कौन से पन्ने में क्या पड़ा वो सब आप जानते हो. मेरे को अभी तक अमेरिका में पता नहीं है. किसी ने बोला कि नया हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, परफेक्ट वाटर के फ्लेवर्ड वाटर आया, शुरू हो गया. मेरे को किसी ने मीटिंग में दिया, लास्ट वीक दिया. मैंने बोला ये क्या है, मुझसे बोला फ्लेवर्ड वाटर है हमारे बिजनेस में. हम बोला हाँ गुड, पता नहीं था मेरे को. हमारा तो रिटेल ऑनलाइन में होता है, ऑटोमेटिकली होता है, बट आई डोंट डू हेवी रिटेल. हमारा 50 पीवी ऐसे होता है वहाँ पे. कई लोग 100 मैक्सिमम 100 200 150 ऐसे करते हैं. बट मेरे को तो अगर किसी ने बोला कि 1000 पीवी करो रिटेल, आई वुड रादर गो क्राउन एम्बेसडर. आई गारंटी आई कैन गो फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर. बट तुमने 1000 पीवी रिटेल बोले, मैं उधर ही फ्रीज हो जाएगा. I can do 200 maximum, you know, because it's a people business, you know. You have to know how to treat people right. Business will be. But stop wondering. ये level पे आपको stop thinking के अरे follow up में क्या बोलूँ, CD उसको ऐसा दूँ क्या ऐसा दूँ, you know. This is, and don't waste time on the wrong people, boss. I am telling you, I do 3 to 5 meetings for you. I love you. I don't want to neglect you. I know. मेरे को पता है कि you are made by God. You are made to create, succeed. But I don't think I am God. I think I have limited things to teach to a new person. And therefore, actually by leaving them alone, I'm actually helping them. किसी को अकेले छोड़ने से actually मैं उनकी मदद कर रहा हूँ. Because I don't know what else. I can't give them attitude, man. You know, I can't give them leadership stuff. थोड़ा बोल के देखना है वो baby steps लेते हैं कि नहीं. तो वो आपके लिए रिलीफ होना चाहिए. ओके जितने मैं यहाँ बात करता हूँ ना, आई डोंट टॉक वन ऑन वन टू पीपल. वन ऑन वन इज स्मॉल मैसेजेस. यू नो, थोड़ा सिखाओ, थोड़ा प्यार से थोड़ा कुछ बोलो. यू नो, आई डोंट सिट डाउन वन ऑन वन विद अ न्यू पर्सन फॉर 1 hour. कोई डेमो दिखा रहे तो ठीक है, वो जितना मैं कम बात कर रहा हूँ उतना अच्छा है. यू नो, बट आई वॉन्ट टू सी हु इज फॉलोइंग मी. ईगल इज व्हाट? 20 people who will follow you. 20 people who want to be like you, right? That's what eagle is. Why they want to be like you? आप लोग लिखो, you're all eagles, right? Proper eagles? आप में से कोई grandmother eagle तो नहीं है? मालूम है grandmother eagle क्या होता है? कि now standing order हो गया, अभी eagle meeting है कुमार का, क्या करें? तो grandmother को standing order में डाल दिया, 10 कर दिया, वो एक grandmother eagle. There's no grandmother eagle here, no? All real eagles? ओके आप अपने लिए लिखो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखो. What are the 2 reasons that people in my group want to be like me? मेरे ग्रुप में 2 कारण लिखो जिसके कारण लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं. मेरे क्या है, what is that about me? दूसरी बात, who is my next leader? Who is see, this is not about, you know, this is, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि I am much superior to anything like that. I have been through all this. Okay? I have been through all this. I have made mistakes, a lot of mistakes. That's how you learn. Okay? But you should always see who's following you. And see, I cannot blame other people. The moment I blame somebody else for my situation, I can't do anything about it. अगर मेरे सिचुएशन के मैं आपको ब्लेम करूं या इसको बोले इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, सिर्फ आई एम परफेक्ट बट एवरीबडी एल्स इज अ प्रॉब्लम, then I am gone, because now I am saying that I can't control my life. All these people control my life. So I can't do anything to change it. वो बोलते हैं ना, if I am, what is the test if I am a leader or not? Turn around and see if there are people following. If there are people following, I am a leader. Otherwise I am just taking a walk. Right? So, why people want to follow me? Who is duplicating me?
आपके ईगलशिप में कौन है जो आज यहाँ रहना चाहता है? Who was fighting in your eagleship to be here? है ना? अभी ईगलशिप के बाद डबल ईगलशिप. Why? Because structure and numbers is going to. Pin has no money. Pin has no money. Pin plus structure plus numbers have money. Okay? Pin plus structure plus numbers have money. दूसरी बात यह है कि this is a business of relationships. What kind of quality relationships are the anchor, the root of your business? You know, how deep your business, how long the tree is, how tall the tree is, depends on how deep the root is, you know. And that is the anchor of this business. And the people have to know that you care, you know. People have to know that you care. It is how much you invest in people. हमारे business में बोलते हैं ना, products don't move people, people move products. So you have to care about people. Now, आपके leg में, आपके eagleship में, write down the name of the person who's going to be the next eagle. यहाँ पे कोई share करना चाहता है? Can anybody tell me what is the answer to the first question? If you don't mind sharing it with everybody, what are the 2 reasons that your people want to be like you? Who can share that with me? Parimal. One reason is that they feel that you are following somebody, they will follow you. Yeah. Parimal and Nina have a special chemistry that people can see that. That when you go to Zurich, you stand like this in the waterfall. Yeah, right? वो फोटो ऐसे एकदम शाहरुख खान और काजोल जैसा ऐसा. Yeah, this is a photo. परिमल ऐसा खड़ा है, नीना is like this facing that way ऊपर. दोनों आसमान की तरफ पीछे waterfall. इधर से फोटो. हाँ, समझ गया. आपको देख के शाहरुख खान भी फाड़प हो जाएगा. Everybody took, but only one made it to the calendar. You talked about the calendar already? Okay, you have a calendar with photos from Zurich. Is that good enough? It's a beautiful calendar with a lot of nice photographs of all the achievers who went to Zurich. Nobody's excited? You just show it. Where is it? NP wanted me to ribbon cut like Rotary Club. Okay. Anybody else? Bolo. Accountability and honesty. Okay. First, 2 things. Okay. Life is far from perfect. I'm not perfect, okay? And you and I argue. You have to argue. Otherwise, you're not married. Something is wrong with you if you're not. But you got to be, also honest and sincere, and don't shock your spouse suddenly with a surprise, like the lady who asked her husband. She said, when I die, will you remarry? He said, yeah, the kids are there. I have to, I have to remarry. So she said, that means that lady will be in this house? Yeah, she will use my bedroom. Yeah, she will use, she'll wear my clothes. He said, let me see. Yeah, she'll wear your clothes, She will drive my new Mercedes Benz. Yeah, she's going to use the new golf clubs that I bought. No, she's left-handed. You had your hand up. What is your name? I'm Dr. Manju Chaturvedi. Okay. I'm for that reason. Good. Very good. Very good. Yesterday I was talking about the pull. Arun, people like freedom. So you are free. People like recognition. Recognition and freedom. Yeah. आपने बोला वो लव पे, उससे और कुछ याद आ गया मेरे को. 1 second, कार्तिक, कि एक ब्रैड डंकन का सीडी सुन रहा था मैं रिसेंटली के. There's a difference between sympathizing and empathizing with people, अगर उनका प्रॉब्लम्स है तो ब्रैड डंकन बोलते हैं उनके लिए वायलिन मत बजाओ. अगर वो दर्द भरी गाना गा रहे हैं तो उनके लिए अकम्पनीमेंट मत दो. अपलाइन को बोलते हैं कि ओ मेरा बेचारा डाउनलाइन, उसके पास पैसा नहीं है, वो पुणे नहीं आ सकता. Empathize with them, And one more thing that came to my mind is, एक चीज़ है जो बिल ब्रेड बोलते हैं, so लोग बुक्स में भी पढ़ते हैं. I don't know, sometimes I don't know why people read books, they don't apply it. Every time you open your mouth for criticizing,
you are not demonstrating that you're reading a book. Your criticism might be great, but ऐसा नहीं कि feedback नहीं देना चाहिए. Of course, there should be feedback. कोई बोलता है कि I had a bad experience at the function, or I had somebody. You should tell your upline about it. You should tell your upline about it. There's no question about it. That is not the same thing as being negative. Something happens in your group. For example, Bill Britt used to say that. अगर मेरा दोस्त रेल के पटरी में बैठा हुआ है और वहाँ से जोर से ट्रेन इज कमिंग एंड आई नो, आई कांट से कि उसको बोलूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, so Bill Britt used to say कि don't judge people, don't judge people. इसका मतलब क्या है कि see sometimes new people come and they judge. फंक्शन में आते हैं, बोलते हैं this is my, and we all do that, this is my favorite speaker, I didn't like this speaker, I like this one better, I like. See, we have to focus on strengths. Abhi dekho, US में the second generation is coming, just like India. Young people are building the business. But the open meeting is not done by second generation unless they've reached the pin level. तो मेरे को अर्जुन ओरी ने, अलका के बेटे ने बोला कि Kumar uncle, some of these people are a little old, when they show the plan. I bring my young kids, young friends, and these are older people, and sometimes the meetings are boring, Sometimes your meetings are exciting. I said, Arjun, you're making a mistake. I said, you know what? When people tell you this, don't play the violin with them. You tell them, look, if that guy is successful, imagine how successful you can be. See, our business, you can't do all that. You can't say favorite speaker. Ek pin level pe, people are sincerely building the business. You have to give everybody equal recognition, And believe it or not, Kanti, when I got in, Kanti is, there was another platinum that Kanti was working with, Crossline Platinum. They were at the same open. And I used to always prefer to bring my guests to the other guys' open. Because I used to have favorite speaker and all that. It really doesn't matter. But at the same time, आपके level पे आपको ये भी responsibility होना चाहिए कि जब open करते हैं, every time you get the mic, every time you get the mic, you have responsibility. 2007 में हम लोग family trip किया था, हम लोग ज़्यूरिक गए थे, वहाँ पे लूसन, वहाँ सब गए थे, वहाँ पे एक 2006 या 2007 something like yeah. So हम लोग जब ज़्यूरिक गए थे, उस वक्त हमने एक we met Indian mother and daughter. वो मदर बोल रही थी कि डॉटर जूनियर चेस प्लेयर है, चैंपियन, एंड शी सेड कि वो जब जीत के आती है तो कोई रिपोर्टर आता ही नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट में, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर जीत के आता है तो सब बहुत फायर्ड अप होके सारे. मैं चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं, बट आई न्यू द रीज़न. द रीज़न इज एवरी टाइम यू आर इन पब्लिक, whether it be sports or whether you are a politician or whether you are in our business, you actually are in also the entertainment business. मतलब क्या है कि we cannot afford to be boring and uninspiring. Okay? The number of your degree of success depends on the number of people you impact. When Sachin Tendulkar hits a century, the whole Colosseum is fired up. When you play chess, you don't have a whole Colosseum looking at you. Because it's like watching grass grow. You are sitting and watching that board for 40 minutes, nobody knows what you're thinking. You are trying to think what he is thinking, you will think, and therefore you will think what he is thinking and not think that way and think that way. And then you cannot have 85,000 people watching you do that. And that's why, it's not a criticism. That's why the reporters don't show up. Because you're not impacting people, no? He is not only scoring a century, but he's impacting people, he's inspiring, and he's, giving entertainment to people, As Eagles, when you show the plan, I'm not saying become an entertainer. Ye to dusra message hoga. Don't do your shero shairi and all that, right? Okay? And don't put your hands in the pockets and dance. No, I'm just kidding. That is for Arun Bhai. Okay? Because Arun Bhai did it was great. I had no problem. Arun Bhai had his pocket in the hand for that. What song was that? Huh? How does it go? Okay, I told him, Arun bhai, ye to theek hai. Fir wo Priyam was pulling his belt with dabang, right? I said, ye sab theek hai, boss. Lekin agar koi, मैंने क्या बोला आपको? मल्लिका शेरावत का गाना आ गया तो हमारे बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करोगे तो बहुत जल्दी डुप्लीकेट हो जाता है.
आज का न्यूज़पेपर में देखा तो वो आदमी भी हो सकता है वो मल्लिका शेरावत. एनीवे नेवर माइंड. ओके, न्यूज़पेपर वैसा नहीं पढ़ता लेकिन एक झलक नजर के सामने आ गया आज में. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना. कितने लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज? There was an article about Sachin Adhikari also today. Times of India, very nice article. Anyway, so मैं क्या बोल रहा था? हाँ, so if you have a mic, so you know, open meeting, you are not, some people do the open meeting to impress their distributors, you know. कि ये जोक नहीं बोलेंगे तो वो हंसेंगे कैसे, ये चार मेरे को कवर करना है. Just keep it a simple plan, address, talk only to the new people. And every time I finish talking, it has to be 5 minutes before people want me to shut up. Normally, I know I have done a good talk. When I finish and people say, man, time kaise chala, pata hi nahi chala. You stop too abruptly. It's a good talk, you know. And you know, it will never be a perfect talk. There's only 9 core steps now. Kya sikhayenge yaar? You know, it's the same thing, you know. But it's how you package it, you know. But when you get up to speak, you have to be inspired. Why do people have favorite speakers? Huh? They are able to inspire. They are, no, you know, so I think that, you know, some people watch it like a performance. कि अभी कुमार क्या बोलेगा, इस बार क्या जोक बोलेगा, you know, that means you're not really applying it to your life, you know. If I like a speaker, I'm going to take an essence of what he says, start teaching it. And I'm going to ignore the imperfections. If you're judgmental, it will only hurt you. I'm telling you, if you start picking, oh, ये मेरे को पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, इसने ये नहीं किया, उसने, you are finished. It's not possible to move on with that kind of burden in life, you know. Because it's very easy to find imperfections in me. But like I said, my people in my business are the ones who are the ones that will overlook that. Not very big imperfections. I'm not saying, I mean, if you're violating cardinal rules, you should watch out for that. But otherwise, everybody is imperfect, you know. Nobody is perfect. I hope you're not thinking my upline is not perfect and therefore I won't submit 100%. Neither are you. Nobody is perfect. You know, but you cover for that. Right? So, at this level, we have to have a thick skin and a soft heart, you know. Because as you grow in this business, people will say things that they shouldn't, you know. Because it's a people's business, no? Somebody you thought will get in, does not get in. At the same time, somebody who gets in and you thought they're going to grow, they quit. Or they say something. See, the thing is to always not react. Who talked about that yesterday? I can't remember. Immediately react mat karna from stage. आपने बोला था ना? हाँ, विनीता ने बोला था. Okay, sometimes we feel that, you know, कोई कुछ बोलता है तो immediately we want to react. Everybody's got a little Shah Rukh Khan inside, you know. But just take a deep breath. It's okay. Most of the time it really doesn't matter, you know. But when you are holding the mic, you have a responsibility, whether it be pace meeting or cover dish or open meeting or anything, you know? And you have to be crisp and quick. In fact, the larger your business grows, the lesser you want to talk. I mean, I had to really, Shankar had to twist my arm to do this meeting, you know, because मेरे को लगता है कि कितना मीटिंग करेगा यार. ओपन मीटिंग किया, मैंने कल फंक्शन किया, फंक्शन के बाद मैंने silver sun-up kiya, and I really don't have much to say to people who, you know, not that I don't, I'm not an insult, I'm not saying, because if you don't have the, look, get 9 legs associating everywhere. Stop beating your one leg to death. Okay, if you're standing, I am telling you, and don't talk too much to them, just pat, that's it. They should, the best meeting you had is when you go to their house and when you're leaving, they follow you, but they don't want you to leave. But you should still leave. But if I'm sitting there and I see them holding hands and they start praying, asking God to make me leave, it's a problem. Okay? People will follow you. I'm telling you, you're a leader, follow you. You say, great, sign them up, loan some CDs, do some quick demos and say, I'll see you later. Okay, make a list of names and let me show you how to make the calls. 3 phone calls, you can do it. And most of the time people will do it. Because I'm not telling you, I'm not trying to get out of work. I'm just at a loss. क्या सिखाऊंगा यार इसको? I'm not trying to make him a PhD in medicinal chemistry, you know, or nuclear technology. I'm just telling him, boss, use your products, get some customers. Let's get other people doing it, you know, offering an opportunity. That's all I'm doing. Sometimes वो overcomplicate करके क्या बोलते हैं. I mean, especially in US when he went online, people started using all kinds of terms to prospect people. What kind of business you're in? I'm in digital commerce. What? See, you have to use terms that people understand.
मैं तो प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग भी नहीं बोलता because the guy doesn't know what you're talking about. No. Oh, I'm in private franchising. Huh? I'm in health and wellness. Oh, that is the other thing, by the way, health and wellness. We have to be a picture of health and wellness. Okay? We can't keep expanding horizontally. Seriously, you know. I mean, look, sometimes people have health problems, thyroid problem because of which they put on weight. Okay, that is understandable. But we cannot be putting on weight because we can't control our, elbow and mouth, hand, It's called the elbow-mouth disease. Every time the elbow moves, the mouth opens. We should not get so big that when we go to the restaurant, they don't give a menu, they give an estimate. वो भी हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में लेटे हुए हैं और पुलिस आके बोलता है कि टाइड को भी आने दो ना. No, it's not funny. It is not funny how much people, and I have been guilty of it at different times in my life also, is that, hey, anything you see, you keep on putting in your mouth, And then you send denial भी होता है. खाते रहते हो, नहीं. तो 70 mm कैसे हो गया फिर? छोटा 35 mm से शोले कैसे हो गया? Right? We are in the health and wellness business, but if you want to sell protein powder, you better at least show that you're worried about your, status, right? Current, this thing. If we are selling toothpaste, look, I love garlic, but you can't make me eat garlic before a meeting. मीटिंग के पहले आप मेरे को गार्लिक खिला नहीं सकते. अगर गलती से गार्लिक चला गया, that day it happened, last month it happened. I was eating at home and Anju's mother put something in the plate, I ate the garlic. Just before the meeting, I said, Mummy, आपको पता है. Then I went and brushed and brushed and brushed. दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो गार्लिक को, forget it. Garlic is garlic. आप स्वीट शॉट करो, स्वीट शॉट फ्लेवर्ड गार्लिक स्मेल आएगा, लेकिन वो गार्लिक जाने वाला नहीं है. Now we have to watch for those things, and boss, let me tell you, in India, of course I am also Indian, it's the Indian thing. In India there is one question that each one of you have to ask your upline. If you ask this question, you are on your way to diamond, and if you are willing to accept the answer. मतलब मैं कोई सवाल पूछता मेरे अपलाइन को, मेरे को ओपन रिलेशनशिप होना चाहिए. Please, my dear upline, anything I am doing wrong, please tell me. Right? This is a general thing. Most people will not say it. Only 5% of you will say it. Most other people are more preoccupied with everybody else doing wrong. They will never come and say कि मैं जो भी गलत बोल रहा कर रहा हूँ, आप मेरे को please correct me anytime. This is a specific question I want every one of you, regardless of pin, to ask your upline. And except my frontline people, I don't have to worry. I don't think that issue is there. But in India, this question should be encouraged to ask. You know what it is? And you should ask and say, please give me the honest answer. Do I have body odor and bad breath? And or, because man, I'm telling you, the answer is a lot of you, yes. और हाथ उठाया तो 2 लोग फेंट हो गया उधर. And me, I'm not saying, I would have said even I had it, but no, I never. वो तो होता नहीं है. अगर the thing is, जिसको है उसको पता नहीं चलता ना. जैसे वो मैंने पहले ही बताया, 4 लोग लिफ्ट में खड़े हैं. एक बोलता है कि किसी का यहाँ पे डिओड्रेंट काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला बोलता है मेरा हो ही नहीं सकता, मैंने यूज ही नहीं किया डिओड्रेंट. But please, would you agree with me? Who agrees with me that some people need to ask their upline, please, because especially when a whole day we work and all this, we don't know, we stink. Okay, but as leaders we got to watch out for that, and the way we dress, little bit nicer, nothing fancy but little nicer, make sure the shoes are clean and everything. I can't think of anybody who's not doing it. Approx, you're doing a good job with all that. But sometimes we don't know why the guy is not getting in, man. Business is great, Bit Worldwide is great, Amway is great, but garlic is not great. So small things we got to watch out for, And I think that we should boldly talk about it, and teach these things. If you have 200 people attending functions, spread across 3 or 4 legs, you're a solid Founders Platinum. When we went diamond in 1995,
I was a brand new diamond. I was on stage. In my talk, I said, this business is nothing but the art of inviting people to meetings. But, the meeting is not where the business is built. Am I confusing you? सी कई लोग क्या करते हैं, ओपन मीटिंग के पीछे छुप जाते हैं, बोलते हैं नया लोग को वहां पे डाल देंगे, सिस्टम उसको बिल्ड करेगा, एंड वो मीटिंग खत्म होती है, अगला मीटिंग अनाउंस करेंगे, पेस मीटिंग में आ जाओ, वापस वो आएगा, पेस में ओपन मीटिंग में आ जाओ, एंड वो वन ऑन वन इंटरेक्शन अवॉइड करेंगे लोगों के साथ. द रियल बिजनेस इज बिल्ट इन होम्स. यू हैव टू गो फ्रॉम होम टू होम टू होम टू होम टू होम. दैट इज द रियल बिजनेस. ओपन मीटिंग इज a result of that activity. आप लोग देखते हैं कि जब आपका ओपन मीटिंग कौन से दिन में, आपका कब है अरुण भाई? फ्राइडे. कितना जल्दी नेक्स्ट फ्राइडे आ जाता है ना. बोलते हैं, कोई किसी ने बोला कि जिंदगी टॉयलेट पेपर की तरह होती है. एज यू नियर द एंड पेपर गेट्स ओवर फास्टर, राइट? एज यू ग्रो ओल्ड, फ्राइडे इज लाइक बूम. आई मीन 1 week इज गॉन लाइक दिस. यस और नो? उसमें क्या होता है कि हम इतने चीजों में बिजी हो जाते हैं कि एक ओपन मीटिंग हो गया एंड नेक्स्ट में ओपन मीटिंग हो गया, बीच में कहीं गए नहीं हम लोग, और ऐसा इल्यूजन में रहते हैं कि बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, या शायद एक घर में गए या किसी. लुक, यू हैव टू गो टू, अभी समझ लीजिए बड़ा ऐसा शॉपिंग ग्रोसरी, क्या बोलते हैं ग्रोसरी को, या डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर. व्हाट्स अ ग्रोसरी स्टोर? नो नो नो, नॉट अ मॉल, अ ग्रोसरी स्टोर लाइक शॉप राइट. नो, बिग वन. शॉप राइट को प्रोविजन शॉप बोलते हैं. सुपर, थैंक यू, एग्जैक्टली. कौन बोला सुपर मार्केट? हाँ, गुड, चेतन एकदम मस्त बोला. सच्ची, ऐसा किसी ने कभी बोला नहीं. सुपर मार्केट में जो आदमी सिर्फ ओपन मीटिंग जाता है ना, दैट इज द ओनर ऑफ द सुपर मार्केट हु इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द कैश रजिस्टर. कैश रजिस्टर में is getting more good, better employees, better machines, better scanning machines, सब करता है, लेकिन शेल्फ में प्रोडक्ट नहीं है. जो आदमी सिर्फ होम टू होम जाता है और ओपन मीटिंग और सिस्टम को फीड नहीं करता है लोगों को, वो ऐसा शॉप ओनर है जिसके शेल्फ आर स्टॉक्ड विद प्रोडक्ट्स बट नो कैश रजिस्टर. दोनों चाहिए ना. See, you have to go from home to home in this business, and that is where your self-image and your ability to lead comes. That is where you have to know when to shut up and when to leave. And sometimes you have to spend extra time with them, especially अभी देखो, किसी ने मेरे को, मैंने होम मीटिंग किसी के साथ सेट किया और थोड़ा दूर है, मैं चेंबूर में हूँ, होम मीटिंग कल्याण में है, और होम मीटिंग के पहले दिन वो प्रीवियस डे वो कॉल करके बोलता है कि मेरा कोई भी नहीं आ रहा है, सबने कैंसिल कर दिया. तो मेरे को क्या करना चाहिए उस संडे, जब मैंने उसका होम मीटिंग 2 बजे शेड्यूल किया? नया आदमी है वो, मेरे को सैटरडे फोन करता है, बोलता है कि कोई नहीं आ रहा है, मीटिंग नहीं रखेंगे. तो मेरे को क्या करना चाहिए? एनीवे जाना चाहिए. वहां जाके ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको दिखाओ कि मेरा कमिटमेंट है बस. अमर ने बताया था ना वो केरला वाला थॉमस का. थॉमस इज गॉन, राइट? Yeah, Thomas had a health issue and liver and all that. I talked to his son, but he's left a good business, good income for his family, you know. Thomas passed away. Oh, he's not that old. But zindagi mein, if things happen, you hear about that all the time. Who was it yesterday I was talking to? She said her father died at 37 with a heart attack. I can't remember who it was now. But things like that are happening these days, huh? Right. Okay. Yeah. So, things like that are happening more in recent times than ever before, That's the other reason to build the business. But anyway, what was my trend of thought here? What was I talking about? Yeah, showing commitment to people. And then feeding people to functions. Listen to me, एक होता है जब कोई पहली बार ये बिजनेस देखता है, बोलता प्रोडक्ट बेचना है, पैसा बनाना है. नहीं, it's more than that. It is forming teams, okay? Forming teams. So, how do you secure your business? How do you make sure that your business doesn't go up, down, up, down, up, down? आपके बिजनेस में आपको 2 तरह के पीवी आएंगे.
एक है स्टेडी पीवी, दूसरा है बोनस पीवी जो सीजनली आएगा बट इट वॉन्ट स्टे। दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपके फैमिली का फ्यूचर कौन से पीवी से बनेगा? स्टेडी पीवी, राइट? ये पीवी क्या होता है? आई एम श्योर आ गया ये महीने, विच इज गुड, फैंटास्टिक, बट एवरी मंथ सेम वॉल्यूम नहीं आएगा, करेक्ट? या किसी ने बड़ा एप्सा का ऑर्डर ले लिया। आई टेल यू व्हाट माय बिगेस्ट फियर इज, अगर समझ लो मैं अभी 4000 पीवी में हूं इंडिया में, व्हाट लेवल इज दैट? 15% में हूं, राइट? 15% में हूं और मैं जोर से बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, राइट? मेरा आई एम डबल लीगल एटलीस्ट, ओके? डबल लीगल इज हाउ मेनी पीपल एट द फंक्शन, शंकर? 40? इज दैट गुड फॉर 15%? हाँ, 40 is kissing silver, okay? मैं 4000, मेरे 40 लोग आ रहे हैं, सब फायर्ड अप हैं। मेरे अपलाइन के साथ काउंसलिंग किया, बोला है कि अभी नेक्स्ट बीबीएस या उसके बाद वाला बीबीएस में मेरा नंबर्स 80 हो जाएगा, एंड अभी सॉलिड रॉकिंग, यू नो, गोइंग इन सिल्वर एंड ऑल दैट, यू नो। और मेरा सॉलिड वॉल्यूम कितना है? 4000 है, समझो 5000 है। और मेरा गोल है कि 3 महीने के बाद सिल्वर जाना है। लेट मी टेल यू व्हाट माय नाइटमेयर इज। नेक्स्ट मंथ मेरे ग्रुप में किसी ने 5000 पीवी का अपसा कर दिया और मैं सिल्वर चला गया। That's a nightmare. It's a problem. Because now I have to get recognized. And next month, recognition के बाद वाला month, I'm back to 4000. Do I like that volume? Absolutely. But I would like to be 10,000 and then 5,000 on top. Hello? I mean, ऐसा हो गया तो हो गया, क्या करें? You don't have to feel bad if it happened, but I would say, oh my God, what do I do now? You know? Because I got recognized for the total PV. I want recognition for the steady PV. And ये एक बोनस है, अच्छा है, ले लो, take it, fantastic. But I want my recognition to be there. Because एक महीने का स्पाइक हो जाता है, next month I'm back to 4000, 3 months later I'm not a gold. And people are saying, why you're not a gold? मेरा ऐसे हो गया था. I went silver, then my father had a heart operation here, I had to come. I went back to, and I did not have the right structure. मैं 1500 पीवी हो गया, 3 महीने के बाद किसी ने पूरे को मेरे ग्रुप से पूछा, you're not gold? I said, boss, what was your PV when I went silver? बोला 2500. अभी क्या है तुम्हारा? अभी 700. I said, look, I will replace you, but I need some time. I don't recommend you talk like this to people, but this is the way I was. I was quite rough, man. I was 27. I didn't care, you know. अरे खुद मैथमेटिक्स करो ना यार। तुम्हारा तुम 27,500 से 700 गया, मैं 1800 कहां से लेके आएगा 2 महीने में? बात सही है ना? मुझे बाद में समझ में आएगा सब, आई प्रॉमिस यू। सब स्टोर कर लेना। हाँ महेश नो, या यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लेटर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? लिटिल थैंक यू। मेरे इतने कंट्रीज में बिजनेस है ना, मेरे को प्लान याद नहीं रहता है हर कंट्री का, वो दैट्स द अदर थिंग, यू नो। But anyway, so Shankar is a solid man. Shankar and Samina, rock solid couple, you know, and they are always serving others, you know. They are people that that when you are around them, he's not rough like me. He is very gentle when he talks. So कुछ ऐसा random statements नहीं मारता है मेरी तरह, you know. He is very solid, Shankar Bhattacharya, and he's a different personality than me. But he learns from me, I learn from him. I know he's not looking at my imperfections. He doesn't judge me. We are united, okay. And in his team, there is Vishal and Sonika, there is Sugit and Kajal. How many of you know that Ajmani is a brand name in this business? You know that, right? When he comes somewhere, you know, you don't have to promote. वो भर जाता है, right? Now, why can't you be like that? You know? Now you, because the way he conveys his message, right? He conveys his message. Or even TD, right? Kanti Gala, Manipal Reddy. Everybody has got their own, but the bottom line is that you need leaders duplicating you. You need people that you can be proud of, that you know that you have helped them secure their future. Every time you reach a pin, you should break that same pin in your group. आप silver जाओगे, 3 महीने में you got to break a silver. You go eagle, you got to break another eagle. That's why the double eagle and ultimate eagle program exists. But the problem is the employee type thinking people. वो 3 लेके ultimate में तो खाली 3 build करेगा. अरे अल्टीमेट ईगल के बाहर भी जिंदगी है. There is life outside ultimate eagle. There is more legs you can build.
आपके 9 legs हर जगह होनी चाहिए. If you are in this room, you should have 9 legs everywhere. And you just sponsor people, they will come. Just keep talking to good quality people, they will come. Correct? Hello? Okay. Then I have some points for you. The reason why we are growing year by year in a mature market, because we are going home to home. There's a lot of people in America who are not growing because they have forgotten the basics. See, you have to break new pins in every leg of yours. In my level, I like to see at least one new platinum in the smallest leg. One new platinum every year. My eyes are always on those legs, and I'm changing my degree of involvement based on that. Otherwise, you'll fall out of qualification. And going from home to home and connecting with people, loaning the right CDs. See, you should know what CD to give to whom. Bill Britt, that day I was talking about this at my team meeting, and then I went to meet Bill Britt at his home. And suddenly after we met, we had a management operating committee meeting. Bill Britt was just sitting next to me. You know what, Kumar? You know what this business is? I said, what? He said, going home to home and loaning the right CDs. I said, wow, Bill, you finally got it. Because I had been talking about it. I mean, he had been talking about it before, but for some reason, हमने वो उसके बारे में बोलना कम कर दिया था. So I suddenly remembered it. I was talking about it. He said the same thing to me. So if you know which CD to give to whom, and if you go home to home, you'll have a huge business. Perfectly correct. आप ही सोचो. If you don't know, and husband and wife together, boss. Sometimes I see wives are disengaged a little bit. जो पहले engaged थे, थोड़ा disengaged. आप आपकी डाउनलाइन को उल्लू बना सकते हो. कहीं कहीं केसेस में आप अपनी अपलाइन को भी उल्लू बना सकते हो शायद, लेकिन मेरे को नहीं बना सकते हो. मेरे को 2 मिनट में पता चलेगा. मैं जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सिग्नल आ जाता है भगवान से कि इस महिला ने ब्यूटी ब्रेक नहीं किया 2 महीने से. मैं भगवान ये थॉट्स मुझे मत दो आप. वो बंदा है, उसके हाथ में रिमोट ज्यादा और मार्कर कम होता है. नहीं खुदा मेरे को मत. वो तो मैसेज आता रहता है मेरे को.